Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Yes. So I think there are a lot of changes in this website. Interface में आज काफी कुछ change नजर आ रहा है ना? Okay. So should we start the session? All right. So let's start the session. और ये सारी चीज हुई जब आज लास्ट सेशन है तब. Okay. So let's start here. In that 2008, there were 44 questions. ठीक है. The 44 questions including quant as well as few questions of DIE. So I'm going to give you 1 hour. Okay, right now the time is 9:01, so I can say, let's say 9:02 to 10:02. So you all can start. Let me assign the privileges to you also. Please check whether you all have got the rights. Yes or no? Yes. Okay. You can also click on this button. वहां पे अब तो ये बटन सामने ही आ गया है, ठीक है ना? Yes or no के buttons, I think you can see it just above the chat. There is a button of yes and no, so you can use that also. All right, so I'm going to mute myself for the next 1 hour. Please start, all of you.
Okay, time up. Am I audible to all of you? Please respond. Am I audible to all of you? Yes. Okay. So I'm going to open the poll. The poll will be open for 5 minutes, so you can start marking your answers. So the poll has started. Please start marking your answers, all of you. Last 2 minutes. Please mark your answers quickly, all of you. Last 90 seconds. Last 1 minute. Last 40 seconds. Last 30 seconds.
Last 10 seconds. Last 15 seconds now. Okay, so let's start with the discussion now. All right. Okay, so can you all see the result of the poll? Please tell me yes or no. Can you all see the result of the poll? Please respond, everyone. Can you all hear me? Yes. Just give me a minute. Okay. All right. So let's start with the discussion. I'm not getting any responses. Am I audible? Abhishek, Rakshit, Subham, Arpit, Mahashri, and everyone. Okay. Okay. Now, so let's start with the first question. The correct answer for question number 1, which some of you have got it right. Just give me a minute before I start the session. हाँ, अब आते हैं. So 68% of you had marked the answer as option number 5, which is the correct answer. So the correct answer for this question is definitely option number 5. Some of you have got it wrong. It's a very, very simple one. 4 digits of this number are omitted so that the result is as large as possible. The largest omitted digit is. So I think the digits which I need to omit is remove 2, remove 1, remove 3, and remove 5. So I'll get the largest number 9876. So the numbers which are removed is 2, 1, 3, and 5. Among them, the largest one is definitely 5. So the correct answer is option number 5. Is that clear? Should I move ahead? Please respond, all of you. Should I move ahead? Please respond. Yes. ठीक है. Okay. Next question, question number 2. Okay. The result of some of you had marked most of you had marked the correct answer as nothing, but that is option number 5. I think that is 45% of you had marked option number 5. And the correct answer for this question is, let me see. That's right. The answer is definitely option number 5 here. Okay, option number 5. That is stock X is more volatile than mutual fund Y. Okay, stock X is
ठीक है ना. Why? The reason being here is nothing. You can see, ठीक है, that the graph of stock X, अगर मैं stock X की बात देखता हूँ, ठीक है, the minimum value of stock X is this one and the maximum is this one. ठीक है. सो स्टॉक एक्स की मिनिमम वैल्यू वाई की मिनिमम वैल्यू से लेस है और स्टॉक एक्स का मैक्सिमम वैल्यू वाई के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है. So that's why it is much more volatile in comparison with the mutual fund Y. So that's why the answer is option number 5. Can I move ahead? Please respond if this question is clear to all of you. चलिए आगे. Yes, no. Yes, ठीक है. एक्चुअली कुछ सिस्टम चेंज हुआ, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हो. Okay, question number 3 and 4. The correct answer of question number 3 is nothing but option number what? Third का the correct answer is option number E. ठीक है. 71% of you have got it right. Should I need to discuss this question or can I move ahead? बहुत ही easy था. An operation this has is defined by A has B is equal to 1 minus B by A. Conclusion. So which of the conclusions are true? I think none of the 3 conclusions are true. All the conclusions are wrong actually. ठीक है. कंक्लूजन 1 में जो आंसर आएगा उसका 1/2 आएगा. कंक्लूजन 2 का जो आंसर आएगा दैट विल बी कम्स आउट टू बी 1/4 एंड कंक्लूजन 3 का जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू -3. सो दैट्स व्हाई नन ऑफ देम आर ट्रू. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर E. So let's move to the next question, question number 4. Okay, the correct answer for question number 4 here is option B for Bombay. Okay, that is option number 2. So let me see how many of you have got it right. The answer for question number 4, 55% of you have got it right. That's a easy one. Should I discuss this question? Please tell me yes or no. As only 55 of you have got it right, चलो discuss कर लेता हूं मैं. ठीक है. The correct answer is definitely option number 2. अब यहां पे क्या है, एबीसी होल नंबर सम, सबको ऐड कर दो, all the 4 equations. So if you add all the 4 equations, what will you get? You will get nothing but that is equal to 3 times A plus B plus C plus D. It is going to be equal to 618. So from here I'll get A plus B plus C plus D is equal to 206. अब एक एक करके just keep substituting these values and if I can find out what is A, what is B, what is C and what is D. A plus B plus C की वैल्यू 118 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उससे D आ जाएगा और D will be comes out to be 88. अगर B plus C plus D की वैल्यू 156 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उससे A आ जाएगा, A will be comes out to be 50. Similarly B will be equal to 40 and C is equal to nothing but that is equal to 28. ठीक है. So only conclusion 2 can be derived. So that's why the correct answer of this is nothing but option number 2. Can I move to the next question? Please tell me yes or no. Okay. ठीक है. Now, question number 5. The correct answer क्या होगा इसका? Option A. 35% of you have got it right only, but why? ये तो easy था. Most of you should have got it right. Can I say 1/3 is nothing but that is 33/99. ठीक है. So 33/99 plus 1/99 that is 34/99 plus greatest integer function of 1/3 is 33/99. 33 plus 2 is 35. So 35/99 and plus 36/99 and so on till 33/99. 33 plus 98 that is 131/99. Now can I say the greatest integer of all the values till from here 33/99 till 98/99 is going to be equal to 0. इन सब की वैल्यू तो 0 0 0 0 होगी. फर्स्ट टाइम 1 कहां से मिलेगा? 99/99 and then 10/99 and so on till 131/99. So all these values is going to be 1. This is 1, this is 1 and so on, this is 1. So from 99 to 131 सबकी वैल्यू 1 आएगी and how many terms are there? 33 terms are there. So 1 plus 1 plus 1 plus 1 33 times. The answer will be equal to 33, which is option number 1. Is that clear to all of you? Please tell me.
Can I move to the next question? Okay. Now let's move to question number 6. So the correct answer of question number 6 is option C, which is equal to √2. Let me see how many of you have got it right. 6th question कितने लोगों का सही है? Okay, only 4 of you have got it right. So most of you have left this question, only 4 of you got. So चलो इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है? It says ABCD is a square. So let me draw a square. ABCD is a square. Okay, and mark the point also. These points are, let's say, A, this is B, and this is C, and this is D. So ABCD is a square. ठीक है? P is the midpoint of AB. Okay, so this is point P, which is the midpoint of AB. The line passing through A and perpendicular to DP. Okay, so I need to join first of all DP. So let me join the line DP. ठीक है? The line passing through A and perpendicular to DP intersects the diagonal at Q and BC at R. Okay, like this one. So we know that this angle is nothing but this angle is 90 degree. This angle is 90 degree. Okay. It intersects the diagonal at Q and BC at R. So this is R. And let me draw the diagonal also. This diagonal is equal to nothing but this is point Q. And let me mark this point as M. ये given है. If AB is equal to 2, if the side of the square is nothing, what is the length of PR? So basically we need to identify what is the length of PR. So let me draw the PR also. So इसे PR की length मुझे find out करनी है. ठीक है? So if I need to find out the length of the PR. Alright. चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. Okay. So right angle triangle है, so we can use the property of the right angle triangle also. If I consider the triangle AQD, ठीक है ना? In triangle AQD, let me write it down. In triangle AQD, ठीक है? AQD में ये हो गया मेरे पास. ADP, if I talking about this angle, that is theta, ठीक है ना? ADP plus DAM, DA and M, this is alpha. ठीक है? AQD मैंने अच्छा गलत लिखा. In any case, remember measurement of the triangle ADP, that is theta plus alpha. The value of theta plus alpha is nothing but that is equal to 90 degree. That is not AQD. This is AMD basically. So in triangle AMD, theta plus alpha is equal to 90 degree. Also the angle DAM, that is alpha, plus angle MAP. अब देखो यहाँ पे MAP, I can say this angle is nothing but this angle is also going to be alpha. ठीक है ना? This is theta, this is alpha and 90. Theta plus alpha is equal to 90 degree. ठीक है? And here I can say this angle plus this angle is also 90 degree. तो ये basically not alpha but this will be theta. और 90 minus theta कुछ भी ले लो. ठीक है ना? This is theta. ठीक है. So we can use the property of the similar triangles here. This is alpha and this is 90 degree. So if I use the property of the similar triangle, can I say that the triangle ADP is similar to the triangle ARB, that is ARB. Why? ये पूरा का पूरा एंगल भी मेरे पास अल्फा हो जाएगा. देख लो यहाँ से. Just a minute, let me highlight that point. This is theta, this is 90, so this is alpha. So these two triangles are nothing but these two triangles are similar. So ADP is similar to ARB. So if the triangles are similar, so I can take AB upon AD is equal to BR upon AP. ठीक है? Which is equal to 1. ठीक है? Let me write down AB by AD. So AB upon AD. ठीक है ना? AB अल्फा के ऑपोजिट इसमें AB है. ठीक है? अल्फा के ऑपोजिट AB है इन ट्राइंगल ARB. और ADP में अल्फा के ऑपोजिट क्या है? ये भी
स्क्वायर की साइड है, तो AB बाई AD इज इक्वल टू BR, ठीक है, BR अपॉन AB, और मुझे पता है कि AB बाई AD आर नथिंग बट दे आर सेम, सो बेसिकली इट इज इक्वल टू 1, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट हियर 1, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 1, सो फ्रॉम हियर AB की लेंथ क्या है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 2, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, EB अपॉन AD इज इक्वल टू BR अपॉन EP होगा ना, is equal to 1. So this implies BR is equal to AP, and AP is equal to 1. So the length of BR is also equal to 1. So BR is 1. Okay, this is 1. This is also 1. And the question is find the length of P2R. आ जाएगा आंसर. This is 1 and this is 1. So P2R is nothing but that is root 2. So this was also easy but tricky था. Can I move to the next question? Please tell me yes or no. Okay, let's move on. Question number 7. So for question number 7, most of you had said that is option number D. Okay, most of you have said that is the correct answer is option number D. 48% of you have said the answer is 3.6, and that's right, this is the correct answer. So let me discuss it quickly. So question number 7 का मैं देख लेता हूँ यहाँ पे. ABCD is a triangle. So let me draw a rectangle ABCD. So this is point A, this is point B, C and D with AD equal to 10. If P is a point on BC, so mark P on a point BC, such that angle APD is equal to 90 degree. So I can join APD, angle APD, which is 90 degree. Alright, this is 90 degree. If DP is equal to 8, DP is equal to 8, then the length of BP is equal to, the length of BP is, this is 8, this is 10, so it triplet हो गया, this is equal to 6. ठीक है, right angle triangle है, तो that will be equal to 6, 8, 10. And I need to identify what is the length of BP. तो अब ये BP की लेंथ कैसे आएगी? I can use the Pythagoras theorem. ठीक है, we do not know what is this is x, this is y, this is 10 minus y, and this is x. So apply Pythagoras theorem here and apply Pythagoras theorem here. So I'll get x square plus y square is equal to 6 square, and then x square plus 10 minus y का whole square, which is equal to 8 square. And by solving these two values, you can find out what is the length of y. दोनों को solve करके दोनों का difference ले लो. So the moment you take a difference, x square will be eliminated, and you can find out the value of y as 3.6. So the correct answer is 3.6. Is that clear to all of you? Should I move ahead? Please tell me yes or no. Okay. Now come to question number 8. देखते हैं कितने लोगों का सही है. For question number 8, most of you, 65% of you had said that is the answer is option number 3. ठीक है, the correct answer is option number 3. And yes, that's right, the correct answer is definitely option number 3. So most of you have got it right. In the figure, number in any cell is obtained by adding two numbers in the cell directly below it. For example, 9 in this one. What is the value of x minus y? So I can just complete the table. This is x plus 2. This is 2 plus 5, 7. And ये 7 हो गया और ये हो गया मेरे पास, that is equal to y plus 9. फिर ये हो जाएगा x plus 9. ठीक है, 9 plus 7 is 16 और ये हो गया 9 plus 9 is 18, so y plus 18. And y plus, from here I can say y plus 29 is equal to 16 plus x plus 9. तो इसे सॉल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा. हाँ, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लिख भी लो, डजंट मैटर एट ऑल, यहीं से आंसर आ जाएगा ना. y plus 29 is equal to 16 plus x plus 9, so I can find out what is x minus y, which is option 3. So this was an easy one, sitter था. Can I move to the next question? Please tell me. Okay, so question number 9 and 10. For 9th, the correct answer is option 4, 76, which 68% of you have got it right. And for question number 10th, the correct answer for question number 10th is again option 4, 51. How many of you have got it right? नहीं. 9th काफी लोगों का सही है, 10th लोगों ने नहीं किया. So let's discuss this question.
these two sets. What does it says? In second year, students and business school can opt for systems operations or HR electives. ठीक है. The number of girls, अब इनमें भी boys and girls हैं. So I can say let's make a like this one, boys and girls. ठीक है. Systems, operations and HR. These are the three electives. So boys, girls, systems, operations and HR. और यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ. ठीक है. Now, further it says, in second year, students at a B school can opt for systems operations or HR elective only. The number of girls opting for operations, and the number of boys opting for systems elective is 37. Okay. So it says the number of girls opting for operations, ठीक है, this, and the number of boys opting for systems. Let's say this is A, number of boys opting for systems. Is system selective is 37. So ये A तो ये 37 minus A हो जाएगा. ठीक है, this is equal to 37 minus A. Alright. Now, similarly, 22 students opt for operations elective. So operations का total 22 हो गया. तो ये operations में कितने हो जाएंगे? 22 minus 37 minus A. तो ये आ जाएगा A minus how much? 37, 22, 32, 15. A minus 15. ये भी A के टर्म से आ गया. This is A minus 15. दोनों को ऐड करके 22 आ जाएगा. That's it. Now after that, 20 girls opt for systems and operative elective. So number of girls opting for systems and operative elective is 27. So this is going to be A minus, I think 17. इन दोनों को ऐड करूंगा तो A is subtract 37 minus 17 is 20. That's right. The number of students opting for systems elective and the number of boys opting for operations elective is 37. Systems ये दो बार आ गया क्या? नहीं. The number of students opting for system selective and the number of boys opting for operations elective is same. मिथले क्या हुआ कि the number of students opting for system selective, this one, and the number of boys opting for operations selective is 37. So ये A minus 15 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा. इन दोनों का सम 37 होना चाहिए. So अगर इन दोनों का सम 37 होना चाहिए तो क्या हो जाएगा ये? This will be minus A. 37 plus 15, 37, 47 plus 5, that is 52 minus A. Now 25 students opt for HR elective. So this is equal to 25. ये वैल्यू 25 आ गई. ठीक है. अब इनको सॉल्व करके मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द आंसर. इससे आएगा क्या? कोई भी वैल्यू ए की वैल्यू क्या आएगी? एवरी डेटा इज इन टर्म्स ऑफ ए. इक्वेशंस आई होप है. Just a minute. The number of girls opting for operations and the number of boys opting for systems elective is 37. इन दोनों का सम 37 है. ठीक है. 22 students opt for operation elective. So ये 22 हो गया तो ये 22 13 ये A minus 15 हो गया. ठीक है. 20 girls opt for systems and operations elective. 20 girls opt for systems and operations elective. ठीक है. So in दोनों का sum is 20. So from here you can find out the value. A minus 17 plus 37 minus A is equal to 20. A minus 17. I think कुछ गलत लिख दिया है मैंने शायद कहीं. 22 the 20 girls opt for systems and operations elective. कुछ इक्वेशंस कहीं पे तो गलत लिखा है. जैसे ये दोनों the number of
कौन सी वैल्यूज गलत लिखी है मैंने किस रो और कॉलम में? A23 आ रहा है, अगर A23 है so 23 minus 15 is how much? 23 minus 17, this is 6. S का टोटल बॉय के S का इक्वल होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, दैट्स राइट। इन दोनों को ये करना है मुझे, ये टोटल ना A प्लस A माइनस 17 इज इक्वल टू 52 माइनस A, यही होगा। और यहां से मेरे ख्याल से 3A इज इक्वल टू 52 प्लस 17, 7 प्लस 2 इज 9, 5 16 9, so A इज इक्वल टू 23 आ जाएगा, दैट्स राइट। A इज इक्वल टू 23, so 23 माइनस 15 इज 8, 37 माइनस 20 ये हो गया, एंड 52 माइनस 23, व्हाट इज 52 माइनस 23? दैट इज 29 आ गया, ये 22, और ये आ जाएगा 14, ठीक है, that's it. So the number of students in a second year, the number of students in a second year is 29 plus 22 plus 25. So 29 plus 22 plus 25 is equal to 76. And the second question, if 20% of the girls offer HR elective, so HR elective में 20% of the girls offer HR elective, ठीक है, then the total number of boys in the second year is, ठीक है, second year is, then the total number of boys in the second year is, तो इसे मैं ये ले लेता हूं, दिस इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है, y इज इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 14 प्लस 6 यहाँ पे 20 है, दिस 20 रिप्रेजेंट्स 80%, यस और नो, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 25, 14 प्लस 6 इज 20, दिस 20 इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज 80% ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, 80% of the total number of the girls. So y की वैल्यू 5 आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इट मीन्स टोटल गर्ल्स इज इक्वल टू 25, 25.8 which is equal to 25. So y is equal to 5. Y is equal to 5, so x is equal to 20. So the question here is, just a minute. Total number of boys in the second year is, so total number of boys in the second year, just add them, 23 plus 8 plus 20. So 23 plus 8 plus 20 is equal to 51. So the correct answer is 51. Is that clear to all of you now? Can I move ahead? चले आगे, तो इजी था, ये डुएबल था। 11 and 12 based on data sufficiency. You must have observed हर साल 2 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के तो आते ही आते हैं। So the correct answer for question number 11 is option number D, option 4. 26% of you have got it right. The correct answer is option number 4. तो इसे मैं डिस्कस कर लेता हूं। If either statement 1 or 2, both of them are individually sufficient. Now, the base of a triangle is 60 centimeter. Okay. So the base of a triangle is equal to 60 centimeter. Let's say this is A, B, and C. And one of the base angle is 60 degree. One of the base angle is 60. What is the length of the shortest side of the triangle? The sum of the length of the two other sides is 80 centimeter. So this is x, this is 80 minus x. So by using the cosine rule, we can find out the x. Yes or no? By using the cosine rule, can we find out the value of x? Cos 60 is equal to nothing but that is equal to x square plus 60 square minus 80 minus x ka whole square upon 2 into x into 60. So first statement is individually sufficient. By solving this, we can find out the values of x and we will get the answers also. Okay? Second, says the other base angle is 45. When the second says the other base angle is 45, so we know that first one of the side is 60, another is 45, so तीसरा ही आ जाएगा, ठीक है, and we can use the property that is sin A upon A is equal to sin B upon B which is equal to sin C upon C. So तीनों sides की ratio आ जाएंगी. Once I get the ratio of all the three sides, क्योंकि we know all the three angles, so we can find out the ratio of A is to B is to C
all the three sides, and then on the basis of this we can identify which one is the smallest side. So second is also individually sufficient. Is that clear to all of you? Please respond. Can I move to the next question? ठीक है. Okay. So 11, 12 is done. Let me move to 30. 30 बहुत केवल 6 लोगों ने अटेम्प्ट किया. क्वेश्चन नंबर 30 and 5 of you had said option 1 for question number 13. Sorry, 11th हमने डिस्कस कर लिया ना, 12th करना है पहले तो. For 12th, the correct answer for question number 12th is okay. काफी लोगों का गलत है. The correct answer for question number 12th is nothing but that is option 1. Only 4 of you have got it right. If statement 1 is alone to sufficient to get the answer. Now let's see here. It says each question is followed by 2 statements labeled as A and B. You have to decide if this is so. Now it is given to us here that A is less than D, which is less than B. अब देखो यहाँ पे जो डेटा गिवन है, A is less than D, which is less than B. ठीक है. We also know that E is less than F. We also know that A is less than B. ये इसका कोई जरूरत नहीं था, ये तो ऑलरेडी मुझे पता है. C is the greatest integer, तो C तो इन सबसे बड़ा है. Is A the smallest integer? The question is A the smallest integer? First statement, E plus B is less than A plus D. ठीक है. Now tell me one thing, we already know that B is greater than A, or we know that A is less than B. ठीक है ना, A is less than B. और E और D के बीच में क्या रिलेशनशिप है? Does anyone have any idea? No. So A is less than B. अब इसके अंदर A में मैं D ऐड कर रहा हूं. ठीक है ना, A में D ऐड कर रहा हूं और B में E ऐड कर रहा हूं. ठीक है. So the moment I add these two, the sign is getting changed. ये साइन ग्रेटर आ जा रहा है. It means जो D की वैल्यू होगी वो E से तो बड़ा ही होगा. Please tell me yes or no. Can I say D is definitely greater than E? ठीक है. So D is definitely greater than E. ये तो मैं इसके बेसिस पे बोल सकता हूं. और E जो होगा वो A से तो छोटा ही होगा. That is for sure. Yes or no? A is also greater than E. So A is also greater than E. ठीक है. So A is also greater than E. So the question here is A the smallest integer? Definitely not. क्योंकि A is greater than E, so A cannot be the smallest integer. So that's why the first statement is individually sufficient. Clear है सबको? Please tell me yes or no. ये देख लो ना, देयर इज अ नंबर A which is less than B. अब उसमें D ऐड कर रहा हूं, इधर E ऐड कर रहा हूं, इनके साइन चेंज हो जा रहे हैं. तो साइन चेंज तभी हो सकते हैं ना कि ये तो D जो होगा वो E से तो बड़ा होना ही चाहिए. अगर दोनों ही छोटे हो गए तब तो साइन चेंज नहीं होता है. तो D हैज टू बी ग्रेटर देन E एज वेल एज A भी E से बड़ा होना चाहिए, तभी तो साइन चेंज होगा ना. इज दैट क्लियर? देखो मुझे ये तो पता ही है कि B इज ग्रेटर देन D. रिमेंबर अमंग B एंड D. ठीक है ना. ये देखो B जो है ये D से बड़ा है. रिमेंबर B जो है वो D से बड़ा है. ठीक है. तो B अगर D से बड़ा है तो इन दोनों को मैं ऐड करने पे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे साइन इज गेटिंग चेंज्ड. B इज ग्रेटर देन D. सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E इज लेस देन A. इज दैट क्लियर नाउ? कैन आई मूव अहेड?
सेकंड से इंडिविजुअली कुछ भी आंसर नहीं आएगा. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13. Let me see how many of you got it right. The correct answer for question number 13 is, some of you said option number 5 first. That's right. The answer is option number 163. Very few of you have got it right. 5 लोगों का सही है, सबका सही आना चाहिए. ठीक है. I can say in this way, Raju is a student in a B school. After every test, he calculates his cumulative average. ठीक है. So I can say average total number of tests. Number of tests is, let's say, A, and the average is equal to X. So the total is A into X. ठीक है. Q2 and OBR, 83 marks in QT. Now the number of tests is A plus 1. ठीक है. He increases his average by 2.75p. So average is now X plus 2.75. So total is equal to A plus 1 into X plus 2.75. And the difference between these two is nothing but that is given us as 83. Because in the next subject he has got 83. So the gap between these two is 83. Third equation, OB is the next subject. So OB means number of subject is A plus 2. यहाँ पे QT की आने से और यहाँ पे OB. His average by 1. So now the new average is nothing but, एक मिनट रुक जाओ, average by 2 है, not 2.75. This is 2, X plus 2. So A plus 1 into X plus 2 होगा ये. That is the equation. A plus 1 into X plus 2. Next QT हो गया 75 marks in OB. तो 75 marks in OB. So OB में 75 marks आ रहे हैं, तो average changes by 1. So next average is X plus 3. So I can say A plus 2 into X plus 3. And the difference between these two equations is nothing but that is given as how much? 75. Solve this, you can find out A as well as X. ठीक है. इन दोनों का डिफरेंस 83 और इन दोनों का डिफरेंस 75 है. So दोनों को सॉल्व करके you can find out A and X. And once you find out A and X, then it says reasoning is the next subject. So next subject is A plus 3. ठीक है. And if he gets 51 in reasoning, so what will be the average? So 51 marks in reasoning. So अब जो टोटल हो जाएगा A plus 2 into X plus 3 plus 51 marks in reasoning divided by number of subject which is A plus 3. That will be my final answer. So basically you need to find out the values of A and X from the first two equations and then substitute it here to get the correct answer. Is that clear to all of you? Okay, chalo, let's move ahead then. Question number 14. 14, another sitter. The answer of this question is option B, that is 18. Let me see how many of you have got it right. Question number 14 कितने लोगों का सही है? 58% of you have got it right. सबका ही सही होना चाहिए था. इससे easy questions तो कभी भी नहीं होगा. We know that in any quadrilateral, ठीक है, दो quadrilateral है, that is A, B, C and D, and there is a point P. The area of the triangle APD, this is 27, this is 12, and this is X, this is X. So we know that the product of these two is always going to be equal to the product of these two. So basically X square is equal to 27 into 12. Solve this, you get the answer. X की value आ जाएगी and then you can add all of them to get the total area, which is option 2. Is that clear? Can I move ahead? Please tell me. Easy था ये? Okay. Question number 15. Let me see. The correct answer is option 5, which is 6. कितने लोगों का सही हुआ है question number 15? Okay. 42% of you have got it right. ठीक है. डिस्कस करता हूँ. So number of ways distributing 4 twice to 3 child so that each child receive at the most 2 twice. So I need to distribute 4 twice to 3 child. Let's say the child is A, B and C, such that each child receives at the most 2. At the most 2. So I think the different combinations can be, it can be 2 2 0, ठीक है, and 2 1 1.
और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? प्लीज टेल मी, एनी अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल? नहीं, पक्का ना? तो इसे अरेंज कर दो 2 to 0. It can be arranged in how many ways? Factorial 3 by factorial 2, which is equal to 3. And 2 1 1 can be arranged in factorial 3 upon factorial 2, which is equal to 3. So the total is 3 plus 3, which is 6. Option 5. Okay. Can I move to next question? Please tell me. चले आगे. 16. The correct answer of question number 16 is option 2. Okay. 19 of you have got it right. So that was an easy one. In a cricket match, Team A scored 232 runs without losing a wicket. The score consisted of byes plus wides plus runs scored by two opening batsmen, that is Ram and Sham. The runs scored by two batsmen are 26 times wides. Okay, 26 times wides. Wide. Okay, यहाँ पे runs कैसे कैसे बन रहे हैं? By plus wide plus runs scored, and that is equal to 232. ठीक है. The run scored by two batsmen are 26 times wide, so R is equal to 26W. ठीक है. There are 8 more byes than the W, so B is equal to W plus 8. Let's substitute all these values here. You can find out everything. You can find out B, you can find out W, you can find out R. And it says the ratio of the runs scored by Ram and Sham is 6:7. Then the runs. ये तो easy था. हो जाएगा. Can I move to the next question? Solve कर लोगे. You can find out all the three, and then after that divide R in the ratio 6:7. Should I move to the next question? Okay, let's see. 17 देखते हैं. How many of you got it right? The correct answer for question number 17 is option B. Only 2 of you have got it right. Let's see. Which one among the choices gives below is a representation of function from x to y? Okay. So basically x and y, that is A, B, C, and this is L and M. चलो एक एक करके देख लेते हैं. F1 A to L, A to M. Now tell me, is F1 a function? बताओ. What is the definition of the function? That for one value of x there has to be one and only one value of y. But here you are getting for one value of x, you are getting two different values of y. So F1 does not represent a function. ठीक है. F2 A to L, B to L, and C to L. Yes, that represents a function. This is many to one function. For three different values of x, we can have one different values of y. So F2 represents a function. Let's go for F3. F3 to L, A to L, B to M, and C to M. Yes, this is also many to one function. So this is also a function. F3 is also a function. Alright. F4, A to L and B to M. ठीक है. Yes, that is also a function. ठीक है, इसमें कोई problem नहीं है. All these four are nothing but they are function. I think आंसर थर्ड नहीं होना चाहिए. F4. मेरे ख्याल से आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3, F2 एंड F3. Why? Because इसके अंदर ये C के लिए क्या आउटपुट है? It cannot be empty ना. For each and every values of x, there has to be one value of y, one and only one value of y. For C, for the input C, there is nothing has been given here, so we can't say anything about 4.
So basically the correct answer should be F2 and F3, not F4. Option 3 होना चाहिए आंसर. या नहीं है, एक मिनट रुक जाओ. दिस इज अ फंक्शन एक्चुअली, ऊपर में लैंग्वेज पढ़ो क्या गिवन है. These are the four subsets. Yes, वही मैंने ध्यान नहीं दिया था. These are the four subsets of x into y. So this is one of the subsets. So this subset definitely represents function. तो ये है function. कोई प्रॉब्लम नहीं. The answer is definitely option number 2. ये subset है उसके. So that subset is a function. Let's move ahead. Question number 18. देखते हैं कितने लोगों का सही है. 18 for question number 18. Most of you have left this question, and the correct answer of this question is definitely option number A, 23. So slightly lengthy but easy है. इतने सारे equations हैं, and it says A is a prime number between 12 and 20. Then the value of C is. इन दोनों इक्वेशन से क्या आएगा? If I solve these two equations, C plus D plus E is equal to 2F and F is equal to 2D here. So from here, what will I get here? That is D को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं, या F की जगह 2D सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, F की जगह 2D आ जाएगा, तो आई विल गेट हियर फ्रॉम हियर दैट C plus E is equal to nothing but that is equal to 3D. ठीक है, C plus E is equal to 3D आ गया. ओके, नाउ इफ यू टेक दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को ले लो. ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को लूंगा तो इससे क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू 2D आएगा, तो 2D उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. E इज इक्वल टू 2C माइनस 2D प्लस 1. ठीक है, E इज इक्वल टू 2C माइनस 2D प्लस 1. ये आ जाएगा यार. और E की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, 31 माइनस C से 31 माइनस C. आई थिंक एक सेकेंड रुको. C प्लस E इज इक्वल टू, ये 3D है ना, 31 गलत थी मैंने. C प्लस E इज इक्वल टू 3D, तो E इज इक्वल टू 3D माइनस C. Solve these two equations now. E is equal to 3D minus C is equal to 2C minus 2D plus 1. So from here, I'll get the value that it comes out to be that 3C, ठीक है, plus 1 is equal to 5D. ये एक और इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नहीं आ गई, और ये इक्वेशन नहीं आ गई. So I'll get 3C plus 1 is equal to 5D. So 5D. D is equal to F by 2. So 3C plus 1, D is equal to F by 2. From here, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाली. तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा that F is equal to nothing but that is equal to 6C plus 2 by 5. So F is equal to 6C plus 2 by 5. That is another equation. So F is equal to 6C plus 2 by 5, और एक ये इक्वेशन है C plus F is equal to 3A. ठीक है ना, C plus F is equal to 3A. Combine these two equations. So if you combine these two equations, C plus F equal to 3 and F की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर देते, you'll get a relationship between C and A. That will be comes out to be 11C plus 2 is equal to 15A. ठीक है, तो अब A की जो वैल्यू है, ठीक है ना, 50. A is equal to 11C plus 2 by 15. अच्छा, another thing is A is a prime number. तो अब अगर A प्राइम नंबर है, तो कैन आई से दैट C 11C और C is equal to 15A minus 2 by 11. तो 15A minus 2 11. A की जो पॉसिबल वैल्यूज है, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A इज ओनली इक्वल टू 13. और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है?
12 and 20 के बीच में 13, 17 and 19. So just substitute these three values and find out at which value C will be integer, because C must be an integer. So I think A की किस value पे C integer आएगा? At A equal to 17, we'll get it as an integer. So A equal to 17 पे ये सारे integers आ जाएंगे. C की value 23 आ जाएगी. So is that clear to all of you now? So it's a very, very lengthy question. You need to write down C in terms of A with the help of all these equations to find the value of C. Can I move ahead? Please respond, all of you. अच्छा, A17 आ गया, C आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है द वैल्यू ऑफ F इज, द वैल्यू ऑफ F इज 28 हियर. सेम वे F की वैल्यू करने के C यहाँ पे है, सब्स्टिट्यूट हियर, F इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज 6 into 23 plus 2/5. तो इससे मुझे सॉल्व करके F आ जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ F इज 28. So is that clear to all of you now? Can I move ahead? Which of the following must be true? Similarly, यहां से मेरे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, we have already find out the three values, so we have already find out the three values, so substitute, keep substituting all those three values in this equation, we can find out all the values here. जो फाइनल आंसर आता है मैं बता देता हूं. ठीक है, बी की वैल्यू 12 आ जाएगी. दैट्स राइट. So is that clear to all of you now, this particular set? Should I move to the next question? Let's come to question number 21. इसे कितने लोगों ने किया है? Okay, great. At least there is one question which none of you have attempted. 21 किसी ने भी नहीं किया है. And definitely it's a difficult question. तो जरूर से डिस्कस. It says for each p greater than 1, sequence aim is defined by a0 equal to 1 and aim is equal to pn plus minus 1 का power n into a. For n greater than 1, for how many integer values of p 1000 is a term of the sequence. Okay. चलो देखते हैं यहाँ पे. A1. What is A1? A1 is equal to p plus. Can anyone tell me what is the value of A1? Substitute कर दो. N equal to 1, so I'll get p minus 1 का power 1 and A0. A0 is 1, so A1 will be comes out to be p minus 1. ठीक है. What is the value of A2? Again substitute n equal to 2. So if you substitute n equal to 2 और यहाँ पे आएगा, it will be comes out to be 3p minus 1. A3 की वैल्यू 1 आ जाएगी. फिर A4 you will get it as 4p plus 1. Just keep substituting the previous value, you will get the answer. Then A5 will be equal to p minus 1. Then I'll get A6 is equal to 7p minus 1. A7 is equal to 1. A8 is equal to nothing but that is equal to 8p plus 1 and so on. ठीक है, A8 is equal to आएगा मेरे पास 8p plus 1. Then I'll get A9 will be comes out to be p minus 1 and then A10 is equal to 11p minus 1 and so on. अब मुझे एक चीज बताओ. The question is for how many integer values of p 1000 is a term of the sequence. 1000 is a term of the sequence. ठीक है. Tell me one thing first of all. ये मेरा क्या है 1000 आ सकता है for how many integer values of p 1000 is a term of the sequence. Is that 1000 can be obtained from p minus 1, it can be obtained from 3p minus 1. ठीक है. और किससे आ सकता है 4p plus 1 से क्या 1000 आएगा. For how many integral values of p 1000 is a term of the sequence. नहीं ना.
4p plus 1 से तो नहीं आएगा, 4p plus 1 is equal to 1000, that is never possible, 1000 is not in the form of 4p plus 1, फिर p minus 1 तो हो गया, फिर 7p minus 1 से भी 1000 आ जाएगा, ठीक है। 8p plus 1 is 1000 divided by 8 gives a remainder of 1, no, फिर इसका 11p minus 1 से रिमाइंडर वो आ जाएगा। सो इफ यू ऑब्जर्व हियर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, 3p minus 1 से नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा 3p minus 1 से, क्यों नहीं आएगा? आई थिंक आ जाएगा। हाँ, 3p minus 1 से नहीं आएगा, दैट्स राइट, 3p minus 1 से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जो भी नंबर है, आई से द ओनली थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज दैट जो भी नंबर है ना, ये देखो 3p minus 1, 4p minus 1, 7p minus 1, फिर 11p minus 1, ठीक है, आई एम गेटिंग p, 3p minus 1, 7p minus 1, 11p minus 1 भी आ रहा है, फिर उसके बाद 15p minus 1 भी आएगा कहीं पे, फिर 19p minus 1, ये सारे आएंगे सर चार चार के गैप पे। सो बेसिकली जो भी नंबर है आई एम गेटिंग n इंटू समथिंग p minus 1, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 1001। आई एम सेइंग k इंटू p minus 1 इज इक्वल टू 1000। सो k इंटू p इट इज इक्वल टू 1001। सो ये जो k है, ये जो वैल्यू k है, फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, यस और नो? तो 1001 को फैक्टराइजेशन कर लो, 1001 का फैक्टर क्या क्या आएगा? टेल मी क्या क्या है? 1001 को फैक्टराइज करूंगा तो 7 इंटू 11 इंटू 13, इसके टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर दिस नंबर? इज दैट इज 8 ना? और 8 क्या सारे सेटिस्फाई करेंगे? हाँ, इसके फैक्टर्स अगर मैं लिखता हूं 1001 के सारे फैक्टर्स ले लो, दैट इज 1 होगा, एक 7 होगा, एक 11 होगा, एक 13 होगा, एक 17 होगा, सॉरी 77, देन अनदर वन इज 91, देन 143 एंड 1001, ठीक है ना? ये हो जाएंगे। तो आई थिंक एक 7p minus 1 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसके बाद 11p minus 1 वाला नंबर होगा, ठीक है। 13p minus 1 आएगा क्या? आफ्टर 11 यू विल डायरेक्टली गेट 15p, रिमेंबर ये चार चार के गैप पे आते जाएंगे, ठीक है ना? यू कैन सी इट हियर, 3p minus 1, फिर चार के गैप पे 7p minus 1, 7 minus 4 इज 11 आएगा, ठीक है। तो 11 के बाद जो ये होगा 13, ये वाले नंबर आएंगे ही नहीं। तो बेसिकली you can get the integer when at 7p minus 1, at 11p minus 1, at 91p minus 1 पे इंटीजर आएगा, ठीक है, एंड 143p minus 1 पे आएगा, और 1001p minus 1 पे आएगा। बेसिकली ऑफ द नंबर विच आर इन द फैक्टर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ 4k plus 3, ठीक है ना? क्योंकि चार चार के गैप पे है, 3p minus 1, 3 plus 4, 7p minus 1, 7 plus 4, 11p minus 1, तो वो सारे फैक्टर विच विल डिवाइड बाय 4 गिव्स अ रिमाइंडर 3, दैट विल सेटिस्फाई। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स है विच विल डिवाइड बाय 4 गिव्स अस अ रिमाइंडर ऑफ 3? सो द फैक्टर्स विच विल 7 देगा, 11 देगा, और आई थिंक 91, 143 एंड 1000, दीज आर द ओनली फैक्टर्स विच विल डिवाइड बाय 4 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। इज दैट क्लियर? सो दैट्स इसका आंसर 5 आएगा, 1001 नहीं देगा। एक सेकंड, 1001p minus 1 आएगा क्या यहाँ पे? ये भी नहीं आएगा। 77, तो 4 ही होना चाहिए फिर आंसर, और एक a1 देगा, दैट्स राइट, एक a1 भी तो देगा ना, p minus 1, हाँ 1001 p minus 1 नहीं, एक p minus 1 देगा। So that's why the correct answer is option 3, which is 5. So it's definitely a very very difficult question. Is that clear? Can I move ahead?
22. Let me see how many of you got it right. Question number 22. 22, the correct answer is option E. 8 of you have got it right. इसमें तो बस एक ही सिंपल सा फंडा है, the roots of this equation. So I need to find out its discriminant. Discriminant is b square, that is 4 square, minus 4ac, that is 4p, c is p, and into 1 plus p. इसे सॉल्व कर लो, ये वैल्यू क्या आती है ये चेक करना है मुझे, दैट इज 16 माइनस 4p प्लस 4p स्क्वायर. ठीक है, ये आएगा डिस्क्रिमिनेंट. अब गिवन है कि p इज लाइंग इन द रेंज 0 to 1. सो इफ p इज लाइंग इन द रेंज 0 to 1, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव ही आ जाएगी. अब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज p इज ऑलवेज लाइंग इन द रेंज 0 to 1. ठीक है, सो द आंसर इज रियल. ठीक है, और दूसरा चीज, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है कि यहाँ पे बोथ नेगेटिव अपोजिट साइन ये सारी गिवन है. So you can just substitute any values of x and then you can cross check it here. Sorry, p की कोई भी वैल्यू ले लो क्योंकि p is lying between 0 to 1. So if the result is true, it must be true for any values of p. So you can take the value of p as half also. So p equal to 1 by 2 लेकर भी solve कर सकते हैं यहाँ पे. Is that clear to all of you? और दूसरा तरीका ये भी है. अब देखो p तो पॉजिटिव है ना, so I can say 1 plus p x square plus 4x plus p. How many sign changes are there? There is no sign changes. So maximum number of positive root is 0. Maximum number of positive root is 0. अब x को minus x से replace करूंगा तो I get 1 plus p into x square minus 4x plus p is equal to 0. How many sign changes are there? 2 sign changes. So maximum number of negative root is 2. It means both the roots are negative. So we can even go by this method, which is Descartes rule. Is that clear to all of you now? Please respond. So by Descartes rule, we can identify that both the roots are negative. Real तो है ही, साथ साथ नेगेटिव भी है. या p की कोई वैल्यू लेकर भी चेक कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं, सम ऑफ रूट से भी माइनस b by a. ठीक है, यस दैट्स राइट. अब इससे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. 39% ऑफ यू हैव गॉट इट राइट. ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स सिमेट्रिकल है इक्वेशन, और मैंने एक चीज बताया था, जब भी इक्वेशन सिमेट्रिकल हो ऑल द टर्म्स शुड बी इक्वल. सो यू कैन पुट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2. x is equal to 1 put करूंगा, you'll get the answer which will become out to be 6. ठीक है, can I move ahead? क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 होगी और उसी से ये सारी चीज आ जाएगी. Actually, if you solve this equation, so this ये जो एक्सप्रेशन आएगा, this expression is exactly equal to 3 into x plus 1 by x. ये एक्सप्रेशन आता है if you solve this completely. But not necessary. 24th. The correct answer for question number 24, which most of you have said, option number 1 बोला है लोगों ने, but the correct answer for question number 24 is option C. The number of possible real solutions of y in the equations. ठीक है, number of real solutions. So I'll find out the discriminant. The discriminant is equal to b square minus 4ac. So b square is equal to 4 cos square x minus 4ac, 4. अब the possible real solution. अब ये जो discriminant है मेरे पास, अब ये जो वैल्यू है, कैन इट बी ग्रेटर देन 0? प्लीज टेल मी. अगर मैं लेता हूं इसे, दिस विल बी कम्स आउट टू बी 4 इंटू cos square x minus 1. What is 4 into cos square x minus 1? Please tell me.
साइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन किसके इक्वल होता है? हाँ, और वैसे भी देखो द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पॉसिबल रियल सॉल्यूशंस. अगर रियल है तो ये जो मेरा टर्म है डिस्क्रिमिनेंट इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है. एंड लाइक यू हैड सेड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स. इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. बट रिमेंबर इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन जीरो. साइन स्क्वायर एक्स ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा. सो इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन जीरो. इट मीन्स it must be equal to 0. So it means discriminant is exactly equal to 0. And if the discriminant is exactly equal to 0, I'll get sin square x is equal to 0. So x is equal to 0 आ जाएगा और I think 180 डिग्री भी आ जाएगा. ठीक है. So that's why for two different values of x, you'll get the answer. ठीक है. x equal to 0, 180 तो उसके correspondingly y की भी दो वैल्यूज आएंगी. Is that clear now? Please tell me yes or no. चलिए आगे. 25th. Again दो ही लोगों ने अटेम्प्ट किया. बोथ ऑफ यू हैड मार्क्ड ऑप्शन 2 and let me see. Yes, that's right. The correct answer is definitely option number 2, 45. So this is a triangle. अच्छा, ये तो देख के ही पता लग रहा है it's a right angle triangle. So I can say this is point A, this is point B, this is point C. It's a right angle triangle. ठीक है, 3, 4, 5. Point D is the mid segment of B, EB. This is point D. Point E is on the segment EC and point F is on the segment BC. If AE is equal to 1.5, E is equal to 1.5. This is point E, this is 1.5. And BF is equal to 0.5. So BF is equal to 0.5. This is 0.5. Find angle DEF. Okay. So we need to find out this particular angle. Okay. Let's say if I say this is angle X, this is angle Y, this is angle Z. ये तीनों में सेम ले लेता हूँ. ये 3.5 हो गई लेंथ, ये भी 3.5 हो गई. ठीक है ना. 3.5 and 3.5. 5 minus 1.5 400. अब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. सो ये एंगल भी Z हो गया. ठीक है. दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू Z. सो दिस एंगल इज ऑल्सो Z. ये दोनों एंगल Z हो गए. ठीक है. और ये 1.5 है और ये भी 1.5 है. सो ये एंगल भी X हो गया. सो दिस इज X एंड X, दिस इज Z एंड Z. ये हो गया. ये एंगल 90 डिग्री हो गया. तो ये जो वाला जो एंगल है ये टोटल 180 माइनस X और ये टोटल एंगल is 180 minus Z. So if you look at the quadrilateral BDEF, in quadrilateral BDEF, angle B is 90 degree, angle D is 180 minus X, angle E is Y, and angle F is equal to 180 minus Z, which is equal to 360 degrees. And remember here, यहाँ से ये जो टर्म है x प्लस जेड माइनस कॉमन होगा तो याद आएगा 180 प्लस 180 इज इक्वल टू हाउ मच 360. 360 प्लस 90 450. So 450 minus of x plus z
plus y is equal to 360. And what is x plus z? X plus z is equal to 180 minus y. So 450 minus 180 minus y plus y is equal to 360. Solve this, you will get the value of y as 45 degree. Is that clear to all of you? Please respond. Okay. 26. Let me see how many of you have got it right for question number 26. Most of you have not attempted this question. The correct answer of question number 26 is option E, 5. मुझे F4 फाइंड आउट करना है. So I'll put x equal to 2. X equal to 2 पे आ गया 3 times F4 plus 4 times F of 1 by 4 is equal to 8. अच्छा, एक और वैल्यू इक्वेशन आ जाए इसी टर्म्स में तो कैसे आएगी? Again, if you take the values of x as minus 7 by 4, क्या आएगा इक्वेशन? 3 times f of 1 by 4 plus 4 times f of 4 which is equal to minus 7. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व कर लो, यू गेट द आंसर. यस, दैट्स राइट. x equal to minus 7 by 4 सब्स्टिट्यूट करने पे आ जाएगा. एनी डाउट्स टू एनीवन नाउ? प्लीज टेल मी. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये भी डिफिकल्ट था. 27. जस्ट इमेजिन, पहले 44 क्वेश्चन थे. 2000 कब की पेपर है? 2008 में. तब टोटल टाइम लिमिट ही 2 घंटे का था. उसमें क्वांट भी था, इंग्लिश भी था, डिसीजन मेकिंग भी था, एलआर भी थे. उस टाइम डिसीजन मेकिंग नहीं आते थे, एलआर के क्वेश्चन आते थे. तो क्या कट ऑफ जाती होंगे फिर इसकी? 27. Most of you have left this question. Only 2 of you have attempted and said that the answer is option number 1. चलो देखते हैं. 4 to 5 marks, that's it. Cut off 4-5 marks से ज्यादा नहीं है. A train left X at A hours B minutes. ठीक है. A hour hand and minute है. Left at A hours and B minutes. Reached to station Y at B hours, reached C minutes on the same day. After traveling C hours and A minutes. ठीक है. तो अच्छा, तो इसमें से जो भी वैल्यूज है A, B एंड C, इट ऑल हैज टू बी लेस देन 24, क्योंकि जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट इट से सेम डे में पहुंच रही है एंड इट टेक्स C hours A minutes. टोटल ट्रैवलिंग टाइम इज नथिंग बट दैट इज C hours एंड A minutes. ये गिवन है. ठीक है. C hours and A minutes. So C hours and A minutes, what does it mean? That A minutes हो गया. Just tell me. हाँ. C hours A minutes. So ये A minutes और B minutes. So basically it means that B minutes plus A minutes is equal to C minutes. ठीक है. और A hours plus C hours is equal to B hours. Hours और hours टाइम को ऐड करूंगा तो 8 hours plus C hours is equal to B hours. Now remember ये क्योंकि तीनों की तीनों वैल्यूज 24 से कम है, तो मिनट्स, ये मिनट्स 24 से कम है, ये भी मिनट्स 24 से कम है, तो कैरी ओवर तो आएगा ही नहीं ना, ये हमेशा मिनट्स में आएंगे. सो B plus A is equal to C and A plus C is equal to B. So it basically says that B plus A is equal to C and A plus C is equal to B.
there will be completely no solution for this equation. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस सी इक्वल टू बी फर्स्ट से आ रहा है c माइनस ए इक्वल टू बी, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इसे सॉल्व भी करोगे तो यू गेट 0 0 एंड 0। द आंसर इज दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? कैन आई मूव अहेड? यस प्लीज टेल मी। ओके ठीक है, 28 देखते हैं कितने लोगों का आया 28 का आंसर सी। किसी ने किया ही नहीं है क्या? तो एक बंदे ने किया, उसका भी आंसर सी है, 5/3। इज दैट द करेक्ट आंसर? यस दैट्स द करेक्ट आंसर। 28 का द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली सी। Only Anisa had done and she has got it right also. Two circle of radius 1 centimeter. Okay. So it says there are two circles of radius 1 meter. Touches at point P. So they are touching at point P. A third circle is drawn through point A, B and C such that PA is the diameter of the circle. Okay. So PA is the diameter of the circle. This is point A. And BC is perpendicular to AP. BC is perpendicular to AP. Is the diameter of the second circle. So BC is the diameter. This one. So और extend कर देता हूँ मैं. This one. Let me mark this as point D. Yeah. A third circle is drawn through the points A, B, and C, such that PA is the diameter of the first circle, and BC is perpendicular to AP is the diameter, the radius of the third circle is. So I need to find out. Now third circle is passing through the point ABC here. Okay, so third circle is passing through ABC. अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ से, थर्ड सर्कल इज पासिंग थ्रू द एबीसी, रेडियस इसकी 1 है, तो ये हाइट ये तो 3 हो गया, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 3, ये डिस्टेंस जो आ गई मेरे पास दैट इज 2 हो गई। ठीक है, रेडियस 1 and 1 2, दिस इज डायमीटर 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अब जो भी सिंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कहने से मैं रिड्रॉ करता हूँ फिगर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया एक तरह से, ठीक है, जिसकी हाइट 3 है, ठीक है, height is 3 and this is 2 and this is 2, and I need to find out the radius of the third circle. The radius of the third circle भी इसका centroid ले लेता हूँ G, ठीक है। So basically there is a circle which is drawn like this one, तो मुझे इसका circle find out करना है ना, circle, तो क्या हो जाएगा इसका circle, centroid में ले लेता हूँ, this is point G, let's say that is the center of this circle, ठीक है, G is the center of the circle, so which means what, that the length AG is equal to BG which is equal to GC, यही होगा, all these three lengths will be equal if G is the center of the circle, so AG is equal to BG which is equal to BG which is equal to CG, let's say all of them are equal to X, तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं x² which is equal to AG² which is equal to BG² which is equal to
CG स्क्वायर, ABC बाई 4A। बट मुझे तीनों साइड्स नहीं पता है ना, तीनों साइड्स आ सकती है। यस, ये 3 है, ये 1 है, तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ABC, है ना। तीनों साइड्स आ जाएंगी, दैट्स राइट। ये आ गया 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 10, √10 आएगा ना, √5 कैसे? एक मिनट, BC इज इक्वल टू 2 हो गया, दैट्स राइट, BC इज इक्वल टू 2। तो CD ये तो 1 हो गया, ये लेंथ इज 3, तो ये हो गया मेरे पास √10 एंड दिस इज ऑल्सो √10। सो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला ABC बाई 4A, ये वाला यूज कर सकता हूं मैं, where ABC is √10 into √10 into 2 and the area of the triangle 4 into half into base is equal to 2 and the height is equal to 3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, so this will be 5/3। ठीक है, the answer is 5/3। Is that clear to all of you now? Can I move ahead? Okay, 29 to 31 ये किसी ने किया ही नहीं है। 29 से लेके 33 तक किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया, नॉट अ सिंगल वन ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड। ठीक है, नो वन हैज अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। DI देखते ही छोड़ देते हो क्या? अब बचता है 34, थोड़े से तो क्वेश्चन बचे हैं। 29 to 33 नो वन हैज अटेम्प्टेड। क्वेश्चन नंबर 34 एक्चुअली गलत है, क्वेश्चन नंबर 34 इज द रॉन्ग वन, बट स्टिल मैं देख रहा हूँ वन ऑफ यू हैव गॉट द आंसर, पता नहीं कैसे आंसर निकाला है उसने। ऑप्शन 5 आया है किसी का, अब कैसे निकाला है मुझे नहीं पता, बट दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। ये जो सीरीज है, इस सीरीज का सम कभी 132 हो ही नहीं सकता है। 34 आगे किसी ने किया है 35। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 इज, लेट मी टेल यू द आंसर, ऑप्शन नंबर 1, 36 to 38। ओके, अटेम्प्ट, सम ऑफ यू हैड अटेम्प्टेड 36 to 38। मैं बता देता हूं इसके आंसर। फॉर 36 आंसर इज ऑप्शन E। फॉर क्वेश्चन नंबर 37 द आंसर इज ऑप्शन नंबर E। For 38 also, the answer is option number A, 1। 39 to 42, again DI. For 39, the answer is option E। For 40, question wrong, ठीक है। 41, the answer is D, option 4, ठीक है। For 42, the answer is D। For question number 43 and 44, 43 का E है, 5, और 44 का the correct answer is option 1। Anyone who has attempted this question? नहीं किया, तो 2 लोगों ने किया है, 44 विच इज राइट, 43 किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया। 35 डिस्कस करना है। ओके, ड्रॉ दिस वन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q आर दिस वन। P is 0 4,
and Q is A, 6. ठीक है, ये हो गया. R is the midpoint of PQ. Join this one. R is the midpoint of PQ. So this is 4 plus 6 by 2. This is A by 2. और क्या आ जाएगा 6 plus 4 5. A by 2 by 5. This is point R. The perpendicular bisector of PQ cuts the x-axis at point this one. Okay. This angle is 90 degree at the point B0. So this is point S. This is point B, 0. So this is point B. Okay. What is the equation of line PQ? Or can I say the product of their slope is always equal to -1? PQ और RS का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा ना. ठीक है. सो देख लो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ स्लोप. व्हाट इज द स्लोप ऑफ PQ? स्लोप ऑफ PQ क्या आ जाएगा? दैट इज 6 minus 4 upon A minus 0 into product of RS, that is 5 minus 0 upon A by 2 minus B, and the product of these two, it must be equal to 1. Just simplify this and tell me क्या आ जाएगा आंसर. That is 2 into 5 is 10 by A into A by 2 minus B is equal to 1. So from here you get a equation. Sorry, -1. So this is -1. तो ये हो जाएगा 10 is equal to minus A into A by 2 minus B. तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी. दैट इम्प्लाइज 20 is equal to A minus A square minus A into A minus 2. ठीक है. तो B की वैल्यू इसे सॉल्व कर लो. तो यू गेट दैट 20 by minus A. 20 by minus A is equal to A minus 2B, और 2B is equal to A plus 20 by A. Yes or no? ये आएगा. और B is equal to A by 2 plus 10 by A. ये वैल्यूज आ गई. अब क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ A B is an integer. How many values of A B is an integer. तो A has to be a factor of 10, I think, isn't it? A तो मेरा 10 का फैक्टर होना चाहिए ना. तो 1 2 5 उसके करस्पॉन्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द आंसर. मेरे अभी 1 2 5 10 4 ही पॉइंट हो गए ना. That's it. So that's why the answer is option number 1. Any doubts to anyone now? 1 means क्या? A की वैल्यू 1 तो ले ही सकता हूं ना. अच्छा, A की वैल्यू 1 नहीं होगी. जस्ट अ मिनट. 1 पे नहीं होगा. 1 पे नहीं होगा. अच्छा, आई थिंक 10 पे होगा. यस. 5 पे होगा. 5 पे होगा क्या? नहीं. 4 वैल्यू जो आएंगी A की वो 10 आएगा, 2 आएगा, -10 और -2. ये 4 वैल्यूज आएंगी. नॉट 1 2 5 10 10, 2 -10 -2. ये 4 वैल्यूज आएंगी. ठीक है.
ट्राई करके चेक करना पड़ेगा मुझे. सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? 1 2 5 10 -1 2 -5 10 ट्राई करना पड़ेगा. तो यहीं तक रखे फिर. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, शुड आई कीप अ सेशन टुमारो फॉर डीआई या नहीं रखना है, या खुद से पढ़ाई करोगे फ्राइडे सैटरडे 2 दिन? मेरे ख्याल से डीआई हम, अच्छा परसों टेस्ट है तो इट्स बेटर दैट यू शुड गिव टेस्ट. डीआई तो वैसे भी इसकी नहीं जा सकते फिर कल. ओके, सो आई थिंक द आइडिया हियर इज कि ऑल ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, यू हैव सॉल्व्ड ऑल द पेपर्स, मतलब 2008 से 2016 9 पेपर्स तुमने सॉल्व किए हैं जैट का. बट द ओनली थिंग इज वेदर यू हैव लर्न समथिंग और नॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्या क्या अटेम्प्ट, आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा कि जैट का पेपर डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आते हैं. हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन शायद फॉर्मूले बेस्ड आ जाएगा. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी एप्लीकेशन बेस्ड. ठीक है. सो यस, क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट. दैट इज द वन पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो माई एडवाइस इन दैट केस विल बी क्वांट के लिए स्पेशली. ठीक है. जस्ट गो राउंड बाय राउंड. फर्स्ट राउंड जो जो क्वेश्चन तुम्हें सिंपल दिखे, जो तुम्हें लगता हो देख के कर सकते हैं, उसे करो. और फिर उसके बाद अपने फेवरेट टॉपिक से लेके क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसे सॉल्व करो. बट यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 1 आवर ऑन क्वांट. अगर 1 घंटे से ज्यादा स्पेंड किया तो हो सकता है तुम्हारे बाकी के सेक्शन छूट जाए. बिकॉज कट ऑफ अगर इस तरह के पेपर आएंगे, कट ऑफ विल बी ऑलवेज ऑन द लोअर साइड. सो क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट. चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे क्वांट हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो. इट्स ऑल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस. एंड यू शुड हैव पेशेंस. क्वेश्चंस आर टाइम कंज्यूमिंग. यू हैव सीन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यू कैन नॉट सॉल्व एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जस्ट इन 1 मिनट. मे बी 2 3 4 मिनट लगेंगे. बट डोंट लूज योर पेशेंस. जस्ट कीप डूइंग. एंड अगेन आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट. नहीं, कितने अटेम्प्ट करके आने से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ये क्वेश्चन मुझसे पूछना भी मत. अब डिपेंड करता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे. जस्ट गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, दैट्स इट. चलो, एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर डाउट्स, प्लीज टेल मी. कितने लोगों का सेंटर आनंद निकेतन माउंट कार्मेल में है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ करता. निगेटिव मार्किंग तो 0.05 है ना. हाउ डज दैट मैटर राजेंद्र? हाँ, इट्स जस्ट 0.05. इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग रॉन्ग, इट्स बेटर टू लीव. ठीक है ना. 0.05 माइनस 0.05 है. 0.05 इज द नेगेटिव मार्किंग फॉर लीविंग द क्वेश्चन. अगर 10 क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन छोड़ोगे, इफ यू लीव 20 क्वेश्चन, देन 1 मार्क विल बी डिडक्टेड. तो इट्स बेटर टू लीव 20 क्वेश्चन ना. 20 क्वेश्चन छोड़ने पे 1 मार्क कम होंगे. दैट्स राइट. तो ये चीज नेगेटिव मार्किंग है छोड़ने पे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तुक्के मार के आ जाओ. द्वारका में राहुल सर का सेंटर है. द्वारका माउंट कार्मेल में. सो यू कैन मीट विद राहुल सर. ठीक है. ओके गाइस, सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट. अच्छा, लास्ट के जो मॉक है, मॉक 5 एंड मॉक 6, मॉक 5 एंड मॉक 6, दे आर ऑन द न्यू पैटर्न. दोज हु हैवंट रिटन अ मॉक, तो मॉक 5 और मॉक 6 को मॉडिफाई किया है न्यू पैटर्न, 2 क्वेश्चंस वाले पैटर्न पे. बैच पार्टी होगी, रिजल्ट लेकर आओ. डेफिनेटली होगी. और इस बार बैच पार्टी बैंगलोर में होगी. अनलाइक हर साल दिल्ली में होती है, तो इस बार वी हैव डिसाइडेड कि बैंगलोर में करेंगे. और मे भी दिल्ली में अगर तुम सब रिजल्ट लेके अच्छे आओगे और जनवरी में ही अगर पार्टी करना है तो दिल्ली में.
ग्रे आउट है तो चलो मैं जीके वाला सेक्शन कल कर दूंगा, अगर ग्रे आउट है तो मैं उसे कल एडिट कर दूंगा, दैट के जितने भी जीके सेक्शन टेस्ट है मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ऑलराइट, सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड hopefully we'll all meet again on Monday with the interview concept session. The first session is based on interview concept. We'll not waste time and start with the interview preparations from the 9th of January. Break बिना कोई ब्रेक लिए 9th जनवरी से जीडीपीआई स्टार्ट कर देंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।